Hello everyone. In the previous lecture, we learned about symmetry of different geometrical figures, right? Now we'll continue with that topic only. But before that, I'll just give a recapitulation of it. Recapitulation मतलब recap दूंगी कि पहले हमने क्या किया था, right? जिसमें हमने line segment किया था, angle, then square, isosceles triangle, then equilateral triangle. We did all the things, right? Now we'll move forward with rhombus. Now the first question which arises, what is rhombus? So सबसे पहले we'll read that definition, that what is rhombus. Answer is a flat shape with 4 equal sides and 4 angles which are not 90 degree. That is एक flat shape होता है. Flat is this. Okay, flat shape with 4 equal sides. चारों जो sides होती है वो equal होती है and 4 angles which are not 90 degree. मतलब 4 angles होते हैं but चारों के चारों 90 degree नहीं होते. See this picture which I am zooming it. It's a rhombus. देखो चारों की चारों side है 8 centimeter. Okay, but उसके जो angles है वो angles 90 degree नहीं है. It is like acute angle और obtuse angle. Acute angle होगा या फिर obtuse angle होगा but 90 degree नहीं है. Okay, the same way now in this rhombus we'll see that where does the line of symmetry come. A rhombus has 2 lines of symmetry. The diagonals of the rhombus are the lines of symmetry. Diagonals मतलब if you see this picture, इसमें जो आपको दो लाइंस दी गई है over there, that is the diagonals. And now you see the symmetry, that is the dotted line. ठीक है, the dotted line states the line of symmetry. So a rhombus has 2 lines of symmetry. Got it? I am reading this again. A rhombus has 2 lines of symmetry. The diagonals of the rhombus are the lines of symmetry. Diagonals जो point दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, those are the line of symmetry. एक बार और सिखा देती हूँ. What is rhombus? A rhombus is a flat shape with 4 equal sides and 4 angles which are not 90 degree. 4 angles है but 90 degree नहीं है. ठीक है, we'll move forward. That is isosceles trapezium. Now what is isosceles? Isosceles वो मैंने आपको पहले सिखाया था. Okay, an angle which the 2 sides are equal, जिसकी 2 sides equal होती है. If you see a triangle, triangle में जो 2 sides होगी वो equal होगी. But the next question which arises is, what is trapezium? Trapezium क्या है? Sorry, just see over here. We'll just see the first of all the definition of it. What is trapezium? पहले तो उसको pronunciation कैसे करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में दिया है, that is trapezium, that is trapezium. Okay, now it's a noun and a flat shape with 4 straight sides, 1 pair of opposite sides being parallel and the other pair not parallel. A flat shape, पहले तो एक flat shape होगा with 4 straight sides होगी. 1 pair of opposite sides, उसमें एक pair होगी वो opposite sides being parallel and the other pair not parallel. जो एक pair होगी वो parallel होगी, दूसरी pair parallel नहीं होगी. एक इधर होगी या फिर एक ऐसे होगी. ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे. See this trapezium, 4-sided figure, 1 pair of sides are parallel. मतलब जो 2 sides होगी वो parallel, simultaneously ऐसे जाती होगी parallel. बट जो दूसरी 2 साइड है, देखो एक ऐसी है और एक straight है, तो this is not parallel, right? So this is what a trapezium is called. Now a trapezium has how many lines of symmetry? Isosceles trapezium has 1 line of symmetry. The perpendicular bisector of the pair of parallel sides is the line of symmetry. अब जो parallel lines होती है उसके बीच में जो bisector
ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाता है, दैट इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सो इन ट्रेपेजियम ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट. गॉट इट? एक बार वापस से रीड कर रही हूँ. An isosceles trapezium has one line of symmetry. The perpendicular bisector of the pair of parallel sides is the line of symmetry. What is trapezium? A flat shape with four sides, that is straight sides, one pair of opposite sides being parallel and the other pair not parallel. Okay? Just see these two figures. It's very clear. This is the first figure is of what is trapezium and the second figure is of line of symmetry in a isosceles trapezium. ठीक है? Now we'll move further with semicircle. A semicircle has only one line of symmetry. The perpendicular bisector of the diameter is the line of symmetry. Diameter मतलब ये बीच की जो line है वो. Okay? That is the center point actually, not the diameter. But a semicircle has one line of symmetry. Semicircle आपने देखा ही होगा, circle का half part. Okay? It has only one line of symmetry. The perpendicular bisector of the diameter is the line of symmetry. Okay? So it is very clear from this picture itself that it has only line of symmetry. Now we'll move with circle. सर्कल सबको मालूम है. अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सर्कल में आप जितनी चाहो उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी कर सकते हो. ऑल द सेकेंड्स पासिंग थ्रू द सेंटर आर द लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अब यहाँ पे अगर सर्कल में सेंटर देखो तो सेंटर में से आप लोग जितनी चाहे उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हो. अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. And the last one which we have is a kite. Kite, everyone knows. A kite has only one line of symmetry. The line passing through the common endpoints of the equal sides of a kite is a line of symmetry. जहाँ से common endpoint और सीधा end आता हो, ठीक है? There is only one line of symmetry in a kite. Let's revise all these things again. We'll start with rhombus. अगर आप rhombus देखो तो a rhombus has two lines of symmetry. The diagonals of the rhombus are the lines of symmetry. A flat shape with four equal sides and four angles which are not 90 degree. Okay, that is a rhombus. An isosceles trapezium. An isosceles trapezium has one line of symmetry. The perpendicular bisector of the pair of parallel sides is the line of symmetry. A flat shape with four straight sides, one pair of opposite sides being parallel and the other pair not parallel. मतलब ट्रेपेजियम है, दो एक पैर पैरेलल होगी, दूसरी पैर पैरेलल नहीं होगी और उसमें एक ही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पास ऑन करता है वहीं पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. Then we have semicircle. A semicircle has only one line of symmetry. The perpendicular bisector of the diameter is the line of symmetry. Then we have circle. A circle has infinite number of lines of symmetry. All the seconds passing through the center are the lines of symmetry. And last one we have kite. A kite has only one line of symmetry. The line passing through the common endpoints of the equal sides of a kite is a line of symmetry. Okay everyone, so this is the end of the topic, that is आपका जो फिगर्स जो एंगल फिगर्स थे, ठीक है, उसका ये जो एक टॉपिक था वो ख़त्म हो रहा है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. ओके, द लाइन सेगमेंट वाला भी वो वीडियो वापस देखना एंड देन आफ्टर राइट ऑल दीज थिंग्स अगेन इन योर बुक. आपकी बुक में ये चीज़ें वापस लिखना, जो ड्रॉ किया हुआ है वो ड्रॉ भी करना, सो दैट आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ कैसे ड्रॉ होती है. देखने से कुछ नहीं होगा. सो यू हैव टू डू इट इन योर बुक ऑल्सो. ओके, एंड
सेकेंड थिंग, अगर आप ये वीडियो देखो तो इट इज़ कंपल्सरी टू पुट अ थंब इन द कमेंट सेक्शन so that we will come to know that you have seen the video. So it is compulsory. और टीचर जो भी होमवर्क दे, प्लीज़ डू दी होमवर्क रेगुलरली एंड शेयर इट ऑन व्हाट्सएप. ये चीज़ें जो हम लोग करवा रहे हैं वो वापस से रिपीट नहीं होगी और अब से आपकी टेस्ट भी होगी, ठीक है, यूनिट टेस्ट. सो यूनिट टेस्ट का जो भी पोर्शन होगा वो यही से होगा, जो वीडियोस हम लोग करवा रहे हैं उसी में से. सो बी केयरफुल, माइंड वेल, आपको प्रॉपरली अच्छे से करना है, ठीक है. टिल देन आई विल टेक यू लीव. बाय बाय.